यो गोटे लाइफ डिपेंड करछि तमन को ऊपर, राइट. So this chapter is about otter, right? So let us first understand and see how otter looks like, because it's not an Indian animal कि हमें सब दिन डे टू डे लाइफ रे को देखिबा. It's this is an otter, okay. The skin is very oily, fine, always, and he likes water the most. पानी ताको बहुत भल लगे. हालांकि से दुटा को जगह रही पारे, पानी रे भी रही पारे, लैंड रे भी रही पारे, ओके. एंड प्लेफुल, नॉट वेरी इंटेलिजेंट लाइक डॉग्स बट प्लेफुल, ओके. सो दिस स्टोरी इज अबाउट a person who adopts an otter. Why do you adopt a pet? When you feel lonely, right? When you don't have a lot of people surrounding you. Basically, some of my friends have also adopted pets because they live alone in a city. They don't have people to hang around. So they come back to their cat or dog, right? Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. Iraq, you know where Iraq is? In the world map, where is Iraq? हाँ, ईरान साइड रे. हाँ भाई, इंडिया साइड रे पाकिस्तान, पाकिस्तान साइड रे अफगानिस्तान, यूएई कूट थी बोटे. अरे you have to be precise. Iraq is here. India, Pakistan, Afghanistan, UAE, Iraq. Okay. So he was flying to Iraq in the new year of 1956, right? Okay. By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. So he was thinking of keeping an otter, not a dog. And that Camusfierna, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. Look, understand this. See, dogs, by then everyone was petting dogs. So it was very natural for humans to be around dogs and how they behave, what they do, right? So he wanted to have a different kind of an experiment. He wanted to pet an otter. Okay. When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, or there were as common as mosquitoes. Because you see, Tigris marshes is basically a marshy area. Do you know what is a marshy area? Wetland जितले था ना, जितले भाभी जो पानी एरिया था ना, पानी एरिया रे फॉरेस्ट रे का उठता नहीं, ताको मार्शी एरिया में को से जगह रे एमाने मस्किटोज भड़िया, जेमती हमर एठी मस्किटोज ओडा अछंती, सेही भड़िया एमा ऑटर ओडा सेठी एते प्रिवेलेंट अछंती, बहुत अधिक मिलंती. For there were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. And who tamed them? Arabs tamed them. तो मैं भाबु जो सर अरब इज एन डेजर्ट भलिया जगहटा सेठी मार्शी एरिया कोट आसी देख बाबा सबुटी सब एरिया थाए. आमे खाली जानि जे कि अधिक डेजर्ट एरिया अछि, ता बोले या नो कि पूरा ईरान रे सबुटी ही खाली डेजर्ट सी अछि. ओके. And were often tamed by the Arabs. We were going to Basra to the consulate general to collect and answer our mail from Europe. So they were going to Basra. Basra is basically a place where in Iran. Okay. At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. So ta sango au si dijona jautile. What is a consulate general? Basically, when you visit to another country, let's say someone from France visits India. Okay. If he wants some kind of documents, or because we are Indians, so our passport office is Indian, our post office is Indian, everything, every institutional organization is Indian. So where will he get his documents? He will get his documents from an embassy, like a French embassy. It is in Delhi. There are US embassy, there are UK embassies, there are a lot of embassies in India. Those embassies represent their own country. For example, if someone comes from US and some mishap happens here, let's say किसी criminal जिनसा हेगला था संगे, और सी बहुत असुविधा रहे अच्छी भी सी किसी criminal activity करता ला, then first we have to report to the embassy. Here, someone from your country with your passport has come in
एंड ये जिनस कर जहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन हुए सेटा से एम्बेसी थ्रू रु ही हुए फाइन तो सेमती सी भी सेठी जाइतला मेल आनिबा पई तो तो सांगर मेल पळे आसला बट तार मेल आस नथला कर दैट मींस कि तार टिके डिले अछि he has to stay there right I cabled to England and when 3 days later nothing had happened I cabled to England is basically at that time you know there are different kind of devices that are outdated right now for example fax do you know what is a fax machine what a fax machine does no okay basically telephone तो जानछ पुरना जो टेलीफोन राइट सेमती किछटा जिनस अछि ओडा कि एबे आ मिलुनी जेमती गोटे टेजर बोली गोटे थिला माने बेसिकली मु एठी गोटे मेसेज प्रिंट करके देबी तांको पाखे सेटा प्रिंट हेकी बाहर and for example भाबी दे मु एठी गोटे मेल करिया चाहू यूएस राइट तो कोन होई था ना गोटे मेल जिवो प्लेन रे सेठी जणे ओल्हेइबो ताकू दबो से खोलिबो बहुत समय लागिबो राइट तो सेठी गोटे नुवा जिंस आसला गोटे फैक्स बेसिकली कोन हुए कि तू एठी गोटे पेपर दबु जहाँ थरे लिखा है सेठी गोटे पेपर से प्रिंट है बाहर जिमिति आमे एटी मेल करछु तो पेपरलेस अछि तो दैट इज नॉट पेपरलेस द इंफॉर्मेशन इज देन ट्रांसफर्ड एंड सेठी प्रिंट है कि सेटा बाहर जाय हार्ड कॉपी हो ओके सो आई ट्राइड टू टेलीफोन व्हेन फैक्स डिड नॉट वर्क दे ट्राइड टू टेलीफोन द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours in advance understand because how do you telephone someone how do you call someone in those days basically it is very costly first of all when a new technology comes in it is very costly for example your smartphones now it is available for 6,000 rupees starting price or 5,000 rupees starting price the very first iPhone or a smartphone the screen smartphone was iPhone that was costly when the new technology comes in it is very costly as time goes on the cost of the device decreases जेतबे सेटा पॉपुलर हो जाए ता कॉस्ट कमी जाए स्टार्टिंग रे सब नुआ जिनस गुडा कौन थाए पॉपुलर थाए आउ से माने आसला बेला माने महंगा थाए बिकॉज नुआ टेक्नोलॉजी गोटे कंपनी करथो समस्त करिया लागिबे ताले सेटा कोन हिजो सस्ता हिजो डिमांड और सप्लाई हिसाब रे राइट तो सेमिति टेलीफोन भी सेतले कोन थिला कॉस्टली थिला आ गोटे टेलीफोन करिया पे कि इंटरनेशनल टेलीफोन करिया पे कोन होतल नोड तार जाइथिबो माने एठी कि जदी यूएस को मु कथा बा जो जो तार जाइथिबो एठु कोठी की यूएस को किम जाइथिबो समुद्र तळे एबे भी अछि से तार फाइन तो इट इज वेरी कॉस्टली बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली तो एडवांस 24 घंटा पूर्व ही एडवांस रे बुकिंग करिया पड़तला कि नै मो कथा है बोली फाइन सो ऑन दिस अच्छा सर मु तो मोडा कथा कहितली तमु भी कोच समसिंग कहिछि तुम सुनो whenever we are studying a chapter now it is very important to understand the context माने को प्लेस रे को ईयर रे कोठी होउची बिकॉज जदी एटा एबे ही थांदा ते कदम सर एते कथा केंगे जो व्हाट्सएप रे मैसेज खत्म कहानी राइट बट एबे तो कथा नो ना कथाटा केबे 1956 रो सो सेतो बेलर एनवायरनमेंट सेतो बेलर टेक्नोलॉजी ताकू ही धरि के हम कथा कहला सेते जहा जहा होतला से सब एनवायरनमेंट हमको स्टडी करिया पड़ियो okay the call had to be booked 24 hours in advance on the first day the line was out of order the first day was line was out of order that means no call can be made ne kharab thila on the second the exchange was closed for a religious holiday on the second day embassy hi band thila one religious holiday thila on the third day there was another breakdown mane se call hi kotha hi ta mail hi as per aji ki chode problem achi aji kon problem thila first day line kharab thila सेकेंड डे रे कोन थला लाइन और द सेकेंड डे रे हॉलिडे थला थर्ड डे रे पुनो ब्रेक डाउन हे देला माय फ्रेंड लेफ्ट त सांगा ताको छाडी पड़ेला एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम 5 days later my mail arrived ते कहले कि ओके मोटी गोटे वीक रही जीबी कोडी ईरान रे और 5 दिन परे हमें देखा आई कैरिड इट टू माय बेडरूम टू रीड एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वेयर 2 Arabs beside them lay a sack that squirmed from time to time तो बेसिकली 5 दिन परे तार मेल आसला से मेल टा धरि की गला ता बेडरूम को सेटा पढिया पे आ सेठी गोटे फ्लोर दीटा अरब थिले जोड़ा जो माने स्क्वाट करके बसले यू नो व्हाट इज स्क्वाटिंग माने मुर्गा बनना जो होता है वैसे बैठे थे कहां पे फ्लोर पे beside them lay a sack that
combed from time to time. sack माने जो अखा थिला आ गोटे अखारे से कौन होतला खाली एमती मझरे मझरे सेठी केमती हली होतला राइट. दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माय फ्रेंड, हियर इज योर ऑटर. तो ता सांग या ପାଇଁ କି ଅଟର କିଣି ଦେଇଛି ରାଇଟ୍. ଆଉ ସେ ତାକୁ ନୋଟଟା ତାକୁ ଦେଲେ, ଦୁଇଟା ଆରବ ଏମିତି ବସିଥିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ନୋଟ୍ ଦେଲେ. ଏଇଟା ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଦେ ୱେର୍ ଫ୍ରମ୍ ଭିଲେଜ ଏରିଆ. ସେମାନେ ଆସିକି ତାକୁ କ'ଣ ଦେଲେ, ଲେଟରଟା ଦେଲେ. With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended. तमने सेही sack टा खोलिबाटू एपन जाएंगे मो लाइफ रे गोटे एमिति फेज चलची जो एपन जाएंगे भी चेंज ही नहीं सेमती ही अछि. तमने चेंज हे गला ता लाइफ से sack खोलिबाटू बिकॉज़ sack भीतर कोन थिला ऑटर. may for all I know not end before I do. It is in effect a thraldom to otters, an otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. See, से कहूची thraldom to otter means जैसे बस में कर देना, वशीकरण. You understand what is वशीकरण? वशीकरण क्या होता है, किसी को काबू में कर देना. जैसा अभी गोटे जेनजी वर्ड भी अच्छी तरह ना पगलू बोलेगा, द सेम मीनिंग यार कोई किसी का मतलब दीवाना हो गया है. तो ऑटर ने बेसिकली उसको अपना दीवाना कर दिया. और सी कहूँ कि जिते बड़े भी मुझे कहा भी देखा हो जहाँ भी ऑटर मैंने एज अ पेट अच्छी सी ऑलरेडी दीवाना अच्छी कार ऑटर द क्रिएचर. अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी वर्डटा फाइन. इट इज बेसिकली एन पुराना वर्ड टे, not a new word, right? The creature that emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resemble most of all a very small medievally conceived dragon. So it looked like very small medievally conceived dragon. Achha, what is medievally conceived? We have to understand. See, at different ages of human earth, people imagine in a different way. For example, right now, how do you think of a dragon? बहुत बड़ा थिबो, बड़ा बड़ा दांत थिबो, एंदी पूरा कौन थिबो, wings थिबो, right? Fire छाड़ुथिबो पार्टी रू, right? This is your imagination. But if we go to medieval times, when जस्ट लोक मैंने क्रॉप करवा शिखुले राइट, क्रॉप्स बुणुले आउ नदी साइड रहा शिखुले से टाइम ड्रैगन टा ये देखा कौन गोटे ऑटर भाया. तो से कौन मैंने सी बेसिकली ये आम वर्ड टा यूज कर बेसिकली इमेजरी क्रिएट हो कि आम ऑटर टा केमती देखा सी रोमांटिसाइज कर ऑटर को लेकिन यार भाई ड्रैगन भाया मीडियम लोक मैंने ड्रैगन को भावुले ऑटर टा से भाया देखा. ओके. From head to the tip of the tail, he was coated with symmetrically pointed scales of mud armor. Basically, मैं कहल ना तांकर बहुत तेलिया था स्केल टा, ने बहुत चिप 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 था, बड़ा अजीब टाइप का और pointed था. तो basically you are familiar with fur, right? fur, cat रो dog रो fur था. एटा fur नो basically fur टा तेल लगे देले जेमती है ना चुट्टी में तेल लगे केमती हुए एमती था ना एमती कंटा कंटा है बाहर से एक्जैक्टली से भाया था फर था. ओके. बिटवीन दोज टिप्स वाज अ विजिबल सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल. तो द फर लुक लाइक चॉकलेट brown chocolate. Okay. He shook himself and I half expected a cloud of dust. Basically he loves mud and water and those kind of things. So when he shook, जैसे तुम देखो ओडे कैट हला कि डॉग हला ओदा हे तो तब एमदे हलिबो जन पानी छाड़िबो नै चारियाडे. तो सिमिलर काइंड ऑफ जिंस होची सेम देले शुक कला तो गोटे डस्ट रो गोटे क्लाउड माने एमते लागला कि गोटे कंप्लीट गोटे पूरा बादलटा बाहर के आसला बेसिकली एक्सैजरेट करा जाउची कि यार केते गंदा हे कि थिला से. बट इन फैक्ट इट वाज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज्ड टू रिमूव द लास्ट वन ऑफ द मड. माने आ मासे जाएंगे सीता को धोउची तादरु कम बाहर मड बाहर बोलेगा एंड सी द ऑटर एज इट वेयर इन हिज ट्रू कलर्स. माने प्रकृति रे ऑटरटा केमिति देखा जाए ताको देखिया में केते लागला और मासे लागला है ना मासे जाएंगे ताको तो लागला ताको धोई की कोन करे पई मड सफा करबा पई माने एते गंदा हे कि थिला से. ओके. मिजबिल as I call the otter. Now MIJBIL is an Arabic word, right? Because the otters are from Arabs,
अरेबियन कंट्री राइट ईरान रो अच्छी ना तो से से वर्डटा भी केमती देला ठीक है अरेबियन वर्ड देला जमती कौन मिजबिल जमती अलादीन मिजबिल दीज आर ऑल अरेबिक वर्ड्स as I called the otter was in fact of a race previously unknown to science and was length christened by geologist Lutragel अच्छा अच्छा गोटे मिनट बेसिकली गोटे कथा खोज ये जो ऑटर रेस थिला ना इटा साइंटिस्ट मानक आपको जना ही नथिले कि एग्जिस्ट करछि बोली तो परे ताको जो रिसर्च करा गला जियोलॉजिस्ट माने तार साइंटिफिक नेम अच्छा देखो तुम जेतक भी एनिमल्स अछंती ना माने के डॉग कैट लायन टाइगर एस आउ ट्रीज भी अछंती मैंगो ट्री ए समस्त ना गोटे साइंटिफिक नेम भी अछि जेमती कॉर्निफेरस लियो टाइग्रिस तो बहुत माने एटा कहीं अच्छी तुम फ्लोरा एंड फौना बायोलॉजी रे पढ़िलनी माने जो क्लासिफिकेशन ही फ्लोरा फौना रो एनिमल्स को कैटेगराइज कराई पढ़िलनी पढ़ाई ता माने 11th रे पढ़ियो बोले मु जाननी एग्जैक्टली केतरे पढ़ियो और गोटे एग्जांपल दोछि त एनिमल किंगडम रो देखिबो ओके एनिमल किंगडम साइंटिफिक नेम माने गोटे थाए कॉमन नेम आ गोटे थाए साइंटिफिकली आम जो नेम रखु टिके खाली आम सब तो पढ़ानी आम जस्ट गोटे आइडिया दूसरी कि तुम मानक केमती नेमिंग था नेम गुड़ा समझ केमती थाए तो देखा आमको नॉट विजिबल मे बी let's say this one okay এটা তো ছোট মানে এটা নো এটা তো ছোট ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତମରଟା କାଇଁ मे बी देखा जाओ नहीं ओके गोटे गोटे करके ना कर दो जमती भाव गोटे एनिमल ना को लायन कह ओके लायन रो साइंटिफिक नेम देखो तो लायन रो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो ठीक है ओके आउटे को लेट्स से कैट रो देखो डिपेंड करे को ब्रीड रो कैट बट कैट रो है फेलिस कैटस माने टोटल कैट फैमिली टाइगर रे भी सेम से माने गोटे ग्रुप रे आसे बट भाभी दे कि मु कहबी ने माने हमर इंडियन कैट अच्छे ओके इंडियन कैट भी बहुत अलग अलग कैटेगरी हो बट स्टिल इंडियन कैट रहा फेलिस लिबिका ऑर्नाटा so there are some words that we commonly use and there are some scientific name of that for example otter देख दो तो otter हला ल्यूट्रिनिया लिखा है ना गुड मिनट सी ऑटर तो हमें देखिला अरब ईरान लुट्रुगैले पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेल तो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑटर तो सेटा ही कहूँ कि आग जूलोजिस्ट माने तो जानी ही नथली कि एग्जिस्ट करछि बोलिका एटा इंपोर्टेंट हला कोडा नाटा लुट्रुगैले लुट्रुगैले पर्सिपिसिलाटा पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर ठीक अच्छे मैक्सवेल्स ऑटर भी कहि परिबा त पूरा नाटा कहबो लुट्रुगैले पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेली फॉर द फर्स्ट 24 hours मिजबिल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्टाइल हॉस्टाइल माने डर लागे ये भाभी दे गोटे जदी डॉग को ना पुराना ओनर जी से ठीक से ट्रीट करनथबो माने बाडा बाडी की छोटे करथबो ना से ना ट्रस्टी करिबो तू तो खाया देवा को जीवो से ट्रस्टी करिबनी से माने डरी के रहइबो बिकॉज़ गोटे डर डेवलप हो जाता है कहते हॉस्टिलिटी व्हेन यू फील
नॉट सेफ, जैसे सेफ फील हुए नहीं ना, एंक्सियस फील हुए कौन हम एमती, तो कहते हॉस्टिलिटी, राइट। तो से नाइदर हॉस्टाइल थिला नॉर फ्रेंडली थिला, और उसको फर्क ही पड़ता, तुम एग्जिस्ट करते हो नहीं करते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समथिंग लाइक दैट, फाइन। ही वाज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट। अलूफ माने बेसिकली क्या फर्क पड़ता है, क्या दुनिया है, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करता, मतलब कीपिंग अ डिस्टेंस, फाइन, जैसे कि इग्नोर करना। ओके नेक्स्ट, choosing to sleep on the floor as far as from my bed as possible. So से कोडी चूज करता सोया पे कि मो बेड रो जत्ते दूर से जाई परिबो ना, पूरा रूम रो कॉर्नर पूरा सैड जाइंग से सोतला, ओके डिस्टेंस मेंटेन करतला। The second night, Mijbil came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in morning. तो next दिन मो पाखा पाखी आसला मो बेड ऊपर को किछि समय पे, okay, and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. किछि घंटा पे से आस्थिला और तार गोड़ पाखरे पाखा पाखी सोइथिला कोडी बेड रे, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. मतलब धीरे धीरे कौन हला ना, माने सेही रूम ना सेति की अछि, तो धीरे धीरे कौन हला ना तार इंटरेस्ट जीवा को लगे, इंटरेस्ट जाएंगे से कुआड़ देखियो लगे लगलो तो सराउंडिंग कौन छी बेडू, अच्छा स्टील टा माने एमती देखिनु पेट माने केमती होनी, तो बेसिकली द सराउंडिंग को लेके बहुत इंटरेस्ट थिला, राइट। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, बेसिकली जिंदी पेट माने गला रे पिनंदी ना, सो ही मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लिट टू द बाथरूम, और कुआड़ नहीं गला तो बाथरूम को, वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर। तापर से पानी देखी तो मैंने पूरा बोलू बल्ले बल्ले करके पूरा खुशी है, तो आधा घंटा जाएंगे से पानी रे पूरा खेली, प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, माने पूरा एमती पानी रे पछता है वार था, माने इट्स लाइक द फेवरेट, जेमते कि व्हेन यू आर वेरी कीन टू गो एंड विजिट अ स्विमिंग पूल और लेट्स अ वाटर पार्क, है ना, व्हेन यू टेक अ स्मॉल किड टू अ वाटर पार्क एंड ही सडनली पार्टी, राइट, समथिंग लाइक दैट। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, फॉर एग्जांपल पूरा एमती डाइव मारता है तळगु पुणी ऊपर को आस्ता है, पुणी बुलुता है, पुणी एमती होता है, राइट, पूरा तार कर्तव्य चलथिला। एंड मेकिंग एनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, माने हिप्पोपोटामस, हैव यू सीन अ हिप्पोपोटामस, राइट, the amount of water a hippopotamus displaces when he goes inside the water, माने से जेतले पानी के जाए तो वो ओडो से तो पानी दे फोपाड़ने चलेडे पूरा वेट एमती पानी बाहर तो बुस करके ने स्लॉश होतो पूरा सही बड़ा फील होतला, ये छोटी एनिमल टे हिप्पोपोटामस लेवल रा वाटर फोपाड़तला, ओके। अच्छा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज यू विल बी आस्क्ड the reaction of the MIJBIL when he first saw water inside the hotel, तो केमती से रिएक्ट करथला ताकू तमे लेखिबो ने पूरा वर्ड सहित कीवर्ड्स अच्छी एतरे कोन कीवर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, he spent half an hour, he went wild with joy in the water, plunging and rolling, shooting up and down, making enough slosh and splash for a hippo, and similar to a hippo से पूरा water displace करथला। This I was to learn is a characteristic of otters, से जानना था, पर तापर तक जाना पड़ा कि यार ये तो भाई कैरेक्टर है किसका, ऑटर का। जिमती डॉग्स मान का कैरेक्टर, दे आर वेरी लॉयल टू देयर ओनर्स, राइट, सिमिति एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक, okay, this is also important, every drop of water must be so to speak extended and spread about the place, a bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows। माने बेसिकली এটা বেসিক্যালি তার চুলবুলাপন को देखौची कार ऑटर, फॉर एग्जांपल गोटे माने टिके कोन शरारती पिलाटा भाव जोठी सजे है जिनस रखा है से टिके भिड़ न देला पर्यंत से रही पारिबो नाही, तो कहू चुपचाप बस नाही, तार हाथटा जीव ही जाई से कोन कर दो एंती भिड़ देबो। सेमिति जदि गोटे पानी अछि जेपर्यंत पानी बाहर को फोपाड़ा है से पर्यंत मन शांति हबो, जो रखिबो साइड रखे पुणी जीवन पानी फोपाड़े बाहर को, जेपर्यंत गोटे बाउलटा जोटा पानी ऊपर एमती भासुची सेटा एमती बुलिकी ओवरटर्न हेनी से पर्यंत मन शांति हबो नाही, फाइन।
बेसिकली दिस शोज कि यार दे आर वेरी यू नो वेरी हाइपर एक्टिव कि आउ माने सराउंडिंग संगे पानी संगे खेलिया को बहुत भल लगे दे आर वेरी प्लेफुल राइट बी सैट इन माने जेपन से ऊपर बसिनी कि स्प्लश करिनी कि ओवरफ्लो हेनी सेपन ता मन को शांति हो नहीं वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स भाई पानी हलुथवा दरकार पानी जदी स्थिर हो गला ना तार किछ गोटे हेजिवो कार ऑटर से पानी अच्छी माने से फ्लो माने हलिवा दरकार पानी ओके व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग व्हेन स्टैटिक इट इज माने जेतेबेले स्टैटिक हे गला ताकू माने कोन बोलू माने राग लागियो हाय काई स्टैटिक हला से पानी तापर से जीवो जाय कि ताकू कोन करियो बुलिवो ता भितरे बुडीवो तळ ऊपर को आसीबो स्प्लश करियो पानी पडिवो ताहाल जायंगी ताकू लागियो हां बे ठीक अछि दिस इज नॉर्मल एनवायरनमेंट 2 days later मिजबिल escaped from my bedroom भाई जेतेबेले सी एंटर कला बेडरूम को ना तो डोरटा खोलियो से डोरटा खोली के एंटर कला से बेडरूम भीतर बाहरी पड़ेला के मिजबिल and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor. Now this is also a very detail. See, if it's a corridor, okay, if it's a corridor, एमती थी ना माने भाभी रास्ताटा याडे अछि बुझि परछ कोन कहू मु रास्ताटा कोडे अछि याडे अछि फील हला बे कोन कहू मु एटा वॉलटा एटा आउटे वॉलटे एठी रास्ताटा केमती अछि एमती अछि तो लेट्स से सी एठी छिडा अछि ओके एठो डोर आसला सीए एठी आसी कि देखिला बेलु को क्वाडे गला बोलिका सी एडी आसी देखला बेलु क्वाडे गला बोलिका सी कोन गेलानी सी खाली एत्ती की देखि परला एत्ते जोर से गला जे एठो से खाली एत्ती की देखि परला कि तार खाली लांजटा ही देखा वाला लास्ट को गला बेले फुश कार ऑटर फाइन माने सेटा को सी द राइटर इज सो स्पेसिफिक अबाउट आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम असे कोड जाउथला सेटा बाथरूम आडिक माने रास्ता कोड लीड करथला बाथरूम आडिक बाय द टाइम आई गॉट देयर he was up on the end of the bathtub पूरा बाथरूम ऊपर अछि ready to 3 2 1 देवा तो तड़को ना सेंस पूरा रेडी अछि and fumbling at the chromium taps with his paws the chromium taps basically जो टैप्स वाला था क्रोम फिनिश था ना सिल्वर फिनिश था टैप्स वाला तो पॉज रे खेलता था संगे टैप संगे एं खेलुसी पानी बारिया पे पानी बाहरले तो बाथटब फुल हबो ना नहीं दैट मींस कि इंटेलिजेंट तो अछि कि जानि छी केडो केमती बुलेले कोन हबो पानी बाहर आई वॉच्ड अमेज्ड माने सी अरे बा कोन करछि देखिबा से पूरा देखुछि के राइटर इन लेस देन अ मिनिट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर ता माने गोटे मिनिट भीतर से एते मोडी देला माने देख केते दिन से भाबिथिबो कि एपड को मोडले बंद होछि सेपड को मोडले खोलुछि से एपड को अधिक खोलिला तापर पानी बाहरला सी फॉर एन एनिमल टू फिगर दिस आउट इट नीड्स इंटेलिजेंस राइट केबे केबे तो हमें भी कंफ्यूज हो जाओ ना कि एआडे खुलले खोलिबो ना सेआडे खुलले खोलिबो ऐसा नो बट से फिगर आउट कर देला एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो तापर के समय पर फुल फ्लो भी अचीव कर देला माने बाथटब रो पानी फुल हवा स्टार्ट हो जी ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे अच्छा से भाबुची कि अरे भाई लकी तो अछि कान से बुलेला राइट आडी की बुलेची जदी लेफ्ट आडी की बुले थांदा ताले बंद हे जाना टैप का he had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. तो से दिनों तो से खोल देता लगा एपड़ू बट केबे केबे से तो कौन करे उल्टा डायरेक्शन रे मोड़ दिए और उल्टा डायरेक्शन रे मोड़ले कोन हबो से आउट टाइट हे जिवो आउट टाइट हे गेल तो पानी बाहर बनी तो जरा पानी न बाहरे से पूरा एमती रागी गया कहीं बाहर नहीं पानी एमती हुए के ऑटर सी बिकॉज दी ओनर से पेट ना एते जिनस कि नोटिस करंत गोटे एनिमल विषय राइट फॉर एनी एनिमल एते जिनस कि नोटिस करंत बट जे जहार पेट थिबो इफ इट इज योर पेट देन यू विल नोटिस दो सर्टेन थिंग्स कि हां अच्छा इथ पे करछि यू थ्योरी भी बनेबु तो अच्छा सब जानछि सी एवडा जिनस हुए वेरी सून मिज सी मिजबिल रु कहां गेला
Mitch, that means he close haba start hochi ke writer je se author sange kon haba start hochi close ho. When you become good friends, then only you have nicknames, right? Eta see dekho hochi now he is close. Mitch would follow me without a lead and come to me when I called his name. ଯେତେବେଳେ ସେ Mitch ଡାକେ ସେ ପଳେଇ ଆସେ ତା ପାଖକୁ। ଏବେ ସେ ସବୁଆଡେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେ ଦି ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ସେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ତା ଖଟ ଉପରେ ଆସିକି ବସିଲା, ତାପରେ ସେ ଗଲା ତାକୁ ବାଥରୁମ ରେ ଗାଧେଇବାକୁ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଦେଖଉଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉଛି। He spent most of his time in play, तो अधिक समय से कोडी स्पेंड करे खेलिबारे। He spent hours shuffling a rubber ball, गोटे रबर बॉल को कौन करेगा सफल करवा एमती बुलेवा ऊपर को पड़ेगा तळु को पड़ेगा डेउची कि नहीं, राइट? Like a four-footed soccer player, so he is a four-footed soccer player, basically football, right? Using all 4 feet to dribble the ball, dribbling बुझ पाछो तो एमती एमती करवा बॉल टा को यार साइड करके, and he could also throw it, फोपाड़ी भी दिए with a powerful flick of the neck, माने मुंडा रे, to a surprising height and distance, माने बहुत दूर से फोपाड़ी भी दिए था क्या को बॉल टा को, माने बेसिकली ताकू एमती फील होतला कि फुटबॉल के खेलुची बोली, ड्रिबल भी करूची फ्लिक भी करूची, माने he is actually playing, okay? But the real play of an otter is when he lies on his back. The real play टा कोन ना जेतेबेले से बैक रे लाई करे माने बुझ पछो तो लाइक his four limbs and hind limbs up, आउ तार पिठीटा तळे, there is something like this. को एनिमल बनोची मूवी जाननी बट ठीक अछि, समथिंग लाइक दिस, पछ पटे गोड़ हाथ गोड़ी ऊपर तो बैक रे से लाई करे, एही समय रे बेस्ट प्ले बने कौन बेस्ट प्ले बने ऑटर बने देवार, ओके ठीक अछि। तो मार्बल्स वेयर मिथ्स फेवरेट टॉय, अच्छा जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉज, ता माने जगलिंग भी करे से, जगलिंग बुझ तो जगलिंग ओके तार फेवरेट एमती करंतनी बॉल से तो समथिंग लाइक दैट, and juggles with small objects, the favorite toys for this pastime, marbles, marble with batti. He would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wide, 2 or more बुझ पछो सेही बडा जगल करबा गोटे दिटा एमती दी तीनटा, flat belly without ever dropping one to the floor, माने केबे भी गोटे तळकु पड़े से कुछ एक्सपर्ट जगलर ता हिसाब रे ता ऑटर भाई बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बेस्ट जगलर, माने सी देखो जी यार ये फ्रेंड हो जी, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट टू लाइक समबडी देन यू सी द गुड थिंग्स, yes or no? Next, oral comprehension check, okay. What experiment did Maxwell think Camosphere would be suitable for? Camosphere is basically the race due to से आसुची ऑटर, कौन एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल भाभी थे कि ये सुटेबल हवा बोली, अच्छा मते को एटी आमे जेतले तार साइंटिफिक नेम पढ़ले ना, एटा आगु पड़िबा कि रे ना तो व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक, अच्छा मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट से लिखा है मिस कले, डिड वी मिस इट एडी आओ परे ना तो थिला तो कमाई डी, अच्छा एडा यस यस, Camosphere ringed by water a stone's throw from its door would be an eminently suitable spot for this experiment. Ringed by water a stone's throw from its door.
बेसिकली तार भाभी एटा हला डोरटा ओके it would a short distance रे let's say somewhere here there is a water spot माने से बेसिकली चाहूला ता डोर पाखे देखिनी गोटे पूल टाइप रो करिया पेंगी एकदम माने घर पाखे रे करिकी गोटे ऑटर रखिया पे इंस्टेड ऑफ अ डॉग गोटे पूल टाइप रो करिकी से गोटे ऑटर रखिया चाहू स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर माने तो टेक्का जति गोटे फोपाड़ी परिबो से भीतर माने पाखा पाखी would be an eminently suitable spot for the experiment हाँ माने से एक्सपेरिमेंट किया डॉग न बदल रे ऑटर रखिले केमती फील हो that is the experiment okay here if I pet an otter instead of a dog and keep him near in my backyard a stone's throw away like in a short distance away this is the experiment right okay why does he go to Barca how long does he wait there and why he went to Barca to pick up a mail from the general consultant right pick up a mail why did he wait for 5 days what happened the first day कौन problem है machine खराब हो गया line was out of order second day holiday regional holiday थिला third day कौन breakdown हो गया right okay so that is why he had to wait how does he get the otter after he got the mail he went back to his bedroom there he saw two Arabs both were squatting the Arabs had a sack that scribbled certain times right then he gave an letter to the man then he received the order तो एटा एक्सप्लेन करिवो कि भाई से गला बेले ता बेडरूम को से देखला दिटा अरब तळे बसथिले तांको पाखरे गोटे अखा भितरे गोटे ऑटरटे थिला जोटा कि से गोटे लेटर चिकी दिथले ता सांग दिथले कारण तो सांग को ही से कहितला ना ताको ऑटर दरकार डॉग दरकार नहीं ओके अच्छा how does he get the otter does he like it yes obviously he liked it pick out the word that tell you this हाँ ମୁଁ କହିଛି ନା ସେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରେ ବୋଲିକା ସେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ड्रैगन भलिया कहला से देखु देखु तो कौन कहला कहाँ से कंपेयर कला ड्रैगन से एटा लो फर्स्ट सेकंड ताको से नहीं की गला कोडी ता घर को तापरे से जो भी एक्टिविटी से करूथला ताकू से टिके बढ़ई चढ़ई कहूथला माने टिके जिमती से गोटे फुटबॉलर भलिया ड्रिबल करुची तापरे से जो जगल करुची पूरा एकदम फ्लॉलेसली जगल करुची केबे भी तळको पकोनी दैट मींस ही लाइक हिम राइट तो ए सब वर्ड्स ओडा हम कहूची कि से ताको लाइक करथला बोली का व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर बेसिकली बैक स्टोरी है पछ माने ऑटर टाको जो साइंटिफिक नेम टा नहीं कि कोन लुथ्रोगेल पर्सिपिसिलाता मैक्सवेली एटा को गेविन मैक्सवेल हिसाब रे दिया ना ए विषय गोटे बैक स्टोरी अच्छे हम कथा बैक स्टोरी विषय कहले मैक्स ना बुक रे नहीं मैक्सवेल ऑटर Basically, he was the first person to pet him. One of the first person. Wait a second. The writer is Gavin Maxwell himself. So basically, he was one of the first person to pet the otter. That is why the otter a scientific name रही कौन है जी? ता ना अच्छी भाई. कौन? लुथ्रीगेल पर्सिपिसिलाता मैक्सवेली से चैप्टर अच्छी बेसिकली सी हम कहू चाहूँ कि यार गोटे लोक गोटे वाइल्ड एनिमल को पेट करिकी ता विषय देख लोक मान को एते किछि ता एक्टिविटी विषय जणा नथला कारण से किए भी ताको पेट करू नथला ता एक्टिविटी विषय जानी की ताको बुझी की तार लाइक कला तार सब जिंस को माने बुझी पड़छ
because of that love he shared with that animal, that is why he was called the ottersman माने otterman. तो otterman भी डाकथले आउ otter रो भी scientific name रे ता ना अछि maxwell अछि ना लास्ट को सेत पेगा एटा कोआ वाला. Okay, take the right answer in the beginning. The otter was aloof and indifferent, friendly, hostile aloof and indifferent हबो ना. hostile माने पा बेसी इग्नोर करथला, hostile भी नथला, friendly भी नथला. से भाई क्या करो क्या करना है मेरे को, क्या मैं अपना काम करता तुम अपना काम करो. बेसिकली ही वाज अलूफ एंड हाँ इन द बिगिनिंग माने जेतले स्टार्टिंग ताको रखिला आखिर जो दिन से ताको बेडरूम को नहीं गला. So neither he was friendly nor he was hostile. He was aloof and indifferent. What happened when Maxwell took MIJBIL to the bathroom? एटा एक्सप्लेन करिया पड़ियो पूरा घटना सब तो कौन हला फास्ट से देखी पूरा जॉय रे भरी गला. तापरे से केते प्रकार कर्तव्य देखेला सेठी कोन कोन कर्तव्य तळु गला ऊपर को आसला रोल डाउन कला रोल अप कला फाइन स्प्लैश कला गोटे हिप्पोपोटामस बळा पानी डिस्प्लेस कला. ए सब जिंस कीवर्ड सहित लिखिया पड़ियो मोडली ऑलरेडी कीवर्ड्स मार्क कर दे जेडी राइट काहे रे कीवर्ड कोडी मार्क करतली 80 कोटी ना 80. So he went wild with joy in water, plunging and rolling in it, lunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub. ऊपर जो होता है तौड़ को आस्था है. Plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater, and making enough slosh and splash for a hippo. Right, similar to the hippo, से इतने water displace करूँ Okay. Next. ते आगू बढ़े ऐसे. हाँ. अच्छा, what did it do 2 days after that? 2 days after that से मनु पड़े था बा. 2 दिन पहले से कौन आला? मनु पड़े नहीं जो डायग्राम कर ले मेडिक. एडा. तापर जाइंग सेठी कौन देखला सी? टैप खोलू सी. पानी आसे पे तापर खोली के सक्सेसफुल हे भी गला तापर रेडी ता काम से स्टार्ट कर देला. ऊपर जो तळु को आसी ऐड करया से जो पानी रो कौन साडा बर्तन जो थाए ताको बुड़ेवा एपट सपट करवा बाहर को फोपाड़ीवा ए सब जिंस लिखिया को पड़िबो. ठीक अछि. ओके. द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा. समान एबे भी कोडी अछंती बसरा रे अछंती. But I dreaded the prospect of transporting Mitch to England because the writer was from England, so he had to go back. Right now he is at Basra, which is in Iran. Okay. And to Camosphere now. The British airline to London would not fly animals. So British Airlines would not fly animals. माने जो aeroplane रे animals माने allowed नथु. ओ माने को British Airlines रे. So I booked the flight to Paris on another airline from there to London. So basically कौन थिला direct flight जो थिला ईरान रू लंडन जाए ए सेठी पेट्स अलाउड नथिला. बट ताकू तो ता मिज को नहीं के जीवार थिला. तो सेति पाएगा सीए बुक कला गोडी की पेरिस. अब पेरिस रु गला इंग्लैंड को. तबे जानछो कोडी अछि पेरिस कोडी इंग्लैंड जाना अछि मैप रे. बेसिकली यूरोप रे ही सब अछि. जदी तम माने केबे यूरोप गला जर्मनी को जीवा ही सब इजी दैट्स ए जर्मनी गल ताले सब जिंस 3-4 घंटा पाखरे माने 4 घंटा दूर रे तते पेरिस मिल जिवो. पुणी जर्मन रु 4 घंटा दूर रे तते फिनलैंड आइसलैंड ओडा सब मिल जिवो. पुणी 3-4 घंटा दूर रे तते इंग्लैंड मिल जिवो. माने बेसिकली जेंती एठू एमिति इमेजिन कर केउंजर जेती बाट जर्मनी रु फिनलैंड आइसलैंड पेरिस एती बाट देयर इन अ वन कंटिनेंट ना यूरोप रे. ठीक अछि. तो बेसिकली सी गला पेरिस रु गला कोडी की इंग्लैंड माने फ्रांस गला तापर फ्रांस रु असला इंग्लैंड माने एटा काई कुआ होची कहलु एटा कुआ होची कि सी केते लाइक करथला काकू ऑटर को. बट आई dreaded the prospect of transporting Mitch to England and to Camosphere. ना Camosphere ना is a place कोडी इंग्लैंड रे जोडी सी जीवो. The British airline to London would not fly animals. So I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. The airline insisted that Mitch should be packed into a box. अने एयरलाइन कौन कहला भाई तमे नबा तो ठीक अछि गोटे डब्बा रे भर्ती करो
18 इंच स्क्वायर डब्बा हवा तक 18 इंच माने कहते 1 फीट 6 इंचेस दिस मच। इतने बड़े डब्बे में तुम लेके जा सकते हो, बाहर नहीं आना चाहिए। अभी ये कहार 60 भितर पशिगला असुविधा हो ना नहीं एयरप्लेन भितर जाऊँ उड़ी तो से कहला कौन करने गोटे डब्बा भितर भर्ती करके नहीं जावाई एंड टू बी क्यारिड ऑन द फ्लोर एट माय फीट तमें तो गोड़ पाखे रहा दरकार कौन से डब्बाटा। आई हैड अ बॉक्स मेड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड सो गोटे घंटा पूर्व से गोटे बॉक्स बनैले। I put Mitch into the box so he would become accustomed to it तामाने आगो से बॉक्स भीतर भर्ती हुए ताकू अकस्टम करिला नल से तो अबाग्या फील करिवो ना एयरप्लेन रे गला बेले से आगो दि तीन थर ताकू भर्ती कला से आगो टिके फैमिलियर हे जो तू एठी रही बोली का एयरप्लेन रे मु गला बेले ओके एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील तापरे हठात किनी खाया पिया करी कि समान कहि गेले बाहर गेले। व्हेन आई रिटर्न माने से बॉक्स रे भर्ती करी पळेला कोडी खाया पे खाई के रिटर्न आसला देयर वाज एन अपॉलिंग स्पेक्टेकल। अपॉलिंग माने कौन कहलु चमत्कार चमत्कार तो मैंने कही कौन कह माने बेसिकली जो देखी कि भाई साहब कर मुंडे हाथ दे दे से टाइप रो किछ गोटे घटना कौन घटना देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। कंप्लीट साइलेंस बुझी पड़छ माने किछि साउंड होनी कौन लागियो भाई ऑटर तो खत्म डर लगुच ना ऑटर खत्म तो नहीं हो गया बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। तो कौन एनी एयर होल से करथिला कौन करिया पे ब्रीथ करिया पे तो ब्लड वाला स्टार्ट मतलब मैंने व्हाट इज द फीलिंग कौन है कौन सब कहानी खत्म। आई विव्ड ऑफ द लॉक एंड टोर अपन द लिड खुल गया तर एंड मीच एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड मान थकी गलानी और कौन पूरा ब्लड पूरा पड़िलानी चारिआडे विम्पर्ड एंड कॉट एट माय लेग असी जाई धरदेला काकू ता गोड़ को धरदेला। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग्स ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स तो बॉक्स जो लाइनिंग्स थला ता पूरा एंती रंपी करी पूरा ये कर सलाड ओके। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट देयर वाज नो कटिंग एजेस लेफ्ट। बेसिकली कौन है ना सी पूरा जोर 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 ता भीतर एमती हलची जो काठर जो लाइनिंग्स गुड़ा ना था एमती कि सब पशि ता भीतर और से ताको ब्लड ब्लड हेकी अछि तो सेति पई का कौन कला ना 10 मिनिट रहला फ्लाइट को जतक भी एमती कॉर्नर जगह थिला जो एमती कंटा कंटा बाहर था ताको सेमती सफा कला कि से कॉर्नर आ न रहू कनो एयरलाइन तो कहि दै छी कि तुम जदी नबो याको कोथर नबो बॉक्स रे नबो से ताको सफा कला कंटा कंटा तापरे it was 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distance 5 miles means 1.6 mile 6 kilometers is 1 mile माने लगभग भाभी दियो केते around 8.59 kilometers दूर रे अछि एयरपोर्ट with traffic okay I put the miserable Mitch back into the box हम जिबा को तो पड़िबो ना इंग्लैंड फ्लाइट मिस गेला सुविधा से मिच को आउथरे से भर्ती कला कोडी से बॉक्स भीतर होल्डिंग डाउन द लिड विथ माय हैंड और लिड टा को तो धरछि हाथ रे धरछि। आई सैट अच्छा ता माने लिड से बंद करी नहीं माने जो बंद करंती लिड से बंद करी खाली एमती रखि। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विथ द बॉक्स बिसाइड मी तो से कार रो पछोटे बसछि बैक सीट रे बॉक्स ता पाखे रे अछि राइट। द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बासरा लाइक अ रिचूटिंग बुलेट माने और एमती करके नहीं जाउछि के ड्राइवर जे गाड़ी चलाउछि अ बुलेट व्हिच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस माने पूरा एमती नहीं कि जाउछि बसरा भीतर काहे फ्लाइट टाइम हेला ना ओके। व्हेन आई रिमूव द लास्ट अच्छा सर कड़ाला आईडी द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ आई वाज रश्ड थ्रू इट बाय इन्फ्यूरेटिंग ऑफिशियल ऑफिसर लागी पैक केते लेट हेलानी कोन फ्लाइट छाडबा को करछ तो गाड़ी हेला तापर से गला। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट एक्सट्रीम फ्रंट एकदम पाखरे थिला माने जो प्लेन रो डोर खोलु खोलु जस्ट पाखरे थिला। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माय फीट विथ न्यूज़पेपर्स तो न्यूज़पेपर रे से कवर कर देला फ्लोर टा बिकॉज़ ब्लड ट्रिकल होतला ना। rang for the air hostess and gave her a parcel of fish the parcel dela fish
ता पैंकी मिज पैंकी okay to keep in a cool place I took her into my confidence about the events of the last hour तापरे took into confidence माने ताको कहिला काउ कहिला एयर होस्टेस को भाई लास्ट आधो घंटा रे कोन हेची एमती हला ब्लड बाहरला ये हला कहिला I have retained the most profound admiration for that air hostess माने से एयर होस्टेस केते भलो थिला ओहो हो कोन कहबी मु से कथा कहू the she was the very queen of her kind माने पूरा राणी थिला एमती स्त्री लोकटा थिला से माने से एवळा कहूची माने that means the person must have helped her right she suggested that I prefer to have my pet on my knee से कहला कि तमे गोड़ पाखरे ताको रख and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude से कहला कि भाई एते भलो लागला मते से तले कहला कि भाई पाखरे रखे दे basically you see ये जो कहै छै ना kissed her hand in the depth of my gratitude this is basically a tradition of France रो ओडे tradition एडा कि माने when you thank someone you kiss their hand fine but not knowing otters I was quite unprepared for what followed kana मु तो एते भल से otter को जानना थली मु जम्मा ही एक्सपेक्ट करनो थली नेक्स्ट घटना रे कोन घटला रेले से ताको ता गोड़ पाखे रखी देई छी तापर मु कोन कहली से कहार जदी 60 भितरे पसी गला ताल असुविधा हो जिवो तापर मिज वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश भाई बॉक्स में संगे संगे से बाहर पड़ला he disappeared at high speed down the aircraft अब हठात किन देखले को नाही से क्वाड गला की जानची there was quacks and shrieks समझे माने साउंड होता ना जैसे मूव करची and a woman stood up on her seat and screaming out और स्त्री लोग तार सीट ऊपर सीट आई हे मूसा 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 fine I caught sight of Mitch's tail disappearing beneath the legs of a portly white turban Indian basically गोटे पंजाबी लोगोटे बसथिला तार गोड़ पाके से देखला ता टेल टा गला बडा तो से गला डाइविंग फॉर इट से गला ताबु डेला के ऑथर जे I missed से डाइव जेतले मारती से मिस कर गला but found my face covered in curry but ता मुंह कोदरे बसी छी curry रे से खाउ दिबो कण curry भरी okay perhaps said the air hostess with the most charming smile it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you अब से डाइव मारी छी आता मुंह जाई की पछी का भीतर कोन मस भाभी दे बटर पनीर थिबो कोन ता भीतर पछी तापर ता मुंह देखि की से एयर होस्टेस ताको हेल्प करतला से चार्मिंगली स्माइल करी कहला तमे बस पड़ मु खोजी गन ओके नेक्स्ट I returned to my seat I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distant chitter of recognition and welcome so मुता बेक गाटलाणी से मुड़ी मुड़ी का क्वाड गला तापरे हठात किनी ओटे फ्रेंडली वॉइस आसला कोडी ता गोड़ पाके से बुलाबुली करी सब करी फिर रिटर्न करी गला and Midge bounded onto my knee began to nudge my face and my neck तापरे देखला लको किथिला मिस रिटर्न करिया गला कार से ता कारनामा करके पुनी रिटर्न करियाला हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड से आगे जिबे पेरिस तापरे पेरिस रो जिबे गुडी इंग्लैंड को आ केमती जिबे ओटे 18 इंचेस रो बॉक्स रे वुडन बॉक्स रे व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स पूरा बॉक्स सारा एमती एपर से पड़ है कि पूरा स्क्रैच कर दी सब वर्ड आ नीचे भी ब्लड हे गलानी और थकी गलानी करके राइट Why did Maxwell put the otter back in the box? How did you think he felt when he did this? बहुत खराब लगी थी कना सही बॉक्स से देखला ब्लड फ्लड बाहर थला तो खराब ऑब्वियस लगी थी ना सही बॉक्स रा तक रखे बटा बट एयरलाइन तो तको कहि छी कि तो ऑटर रेंजर बॉक्स रे ही नै कि जीबू सेते से रखिला आ कना काई कि रखिला कना एयरलाइन तांको कहि छी कि तमे 18 इंचेस रा बॉक्स से तको नै कि जीबू बोलिका असे भलो फील ऑब्वियसली करनतला ही फेल्ट वेरी सॉरी बिकॉज़ दिस हैपेंड Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? Because she allowed the author to put the box without the lid at his knees. And knees है तको रखिया पे allow करना. What happened when the box was opened? गोटे सेकंड रे ही मिच गायब हो गला, right? Okay. After an eventful journey, गोटे मस्त जर्नी पर Maxwell and his author reach London, where he has a flat. से लंडन गले जोडी तार गोटे फ्लैट अछि कार मैक्सवेल नेक्स्ट पढिबा काली पढे कि यार क्वेश्चंस कर ए जाएंगे क्वेश्चनर्स करिवो हो जाएंगे पेज नंबर 8 जाएंगे
क्वेश्चन नंबर 5 माने दीटा करिवो एटा गोटे आ ऊपरटा जोडा हमें डिस्कस करू फाइन गोटे तो रीड करिवो तापरे एति की क्वेश्चनर्स करिवो निज ओन वर्ड्स रे ही लिखिया को ट्राई करिवो हमें खाली इवैल्यूएट करिवो ओके शेयर फिर दैट्स इट फॉर टुडे प्रियंका क्लियर है ना बाबा हेलो Yes. ओके ओ भाई तेरा माँ कुछ